वापस कब आओगे? When will you come back? When will you come back? متى بترجع؟ متى بترجع؟ متى بترجع؟ English. متى means when. بترجع will you return? Will you come back? उर्दू. متى मतलब कब. बतरजा आप वापस आएंगे. बतरजा आप वापस आएंगे. और इस बात को कहने का जो दूसरा तरीका है वो है मता बतरद. मता बतरद. मता कब. बतरद आप वापस आएंगे. In English, mata means when. बतरद will you come back? वो वापस कब आएगा? वो वापस कब आएगा? When will he come back? The third person. When will he come back? هو متى بيرجع؟ هو متى بيرجع? In English, who. Who here, who means the third person. It means he. متى when. بيرجع بيرجع will he come back. متى هو متى بيرجع. In उर्दू. उर्दू में कहेंगे हु मतलब वो आदमी. मता कब. बयरजा बयरजा वापस आएगा. वो कब वापस आएगा. हु मता बयरजा. ये आमतौर पर सऊदीया की तरफ इस्तेमाल होता है, सऊदीया और अरब पड़ोस के ममालिक में. This way of saying is usually spoken within Saudi Arabic and also the neighboring countries. The second way to say is who متى بيرد. بيرد 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 is بيرد. In English, who means he. متى means when. بيرد will come back. उर्दू में हु मतलब वो, मता कब, बयरद वापस आएगा. ये अरबी आमतौर पर इमारात और अरब के जो ममालिक हैं वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं. This is usually used in UAE and also the neighboring countries. मैं वापस आ रहा हूँ. I'm coming back. أنا راجع. أنا راجع. English. أنا means me or I am. راجع coming back. Simple. उर्दू. أنا मतलब मैं. राजा वापस आ रहा हूँ. आसान है. This is usually used in Saudi and Kuwait and most of the Arabic countries, as well as the second way I'm going to say is also used throughout, which is أنا راد. أنا راد. أنا means me or I am. راد coming back. दूसरा तरीका है कहने का वो है أنا राद. أنا मतलब मैं, राद मतलब वापस आ रहा हूँ.